A very good afternoon to each and everyone. Welcome back to my class, students. We are learning grammar and we are on chapter number 5. And the name of the chapter is common noun and proper noun. We have started the chapter. In my last video, you have seen, you might see that I have started with a noun. I have started with the noun. What is noun? A noun is a naming word. Students, look at the board. Look at the board, students. We have started this chapter. Noun. A noun. What is a noun? It's a naming word. Noun is a naming words. Noun is a naming words. Naming words means what does noun name? Name किसका बताता है? It names a person. It names a person, animal, place, or things. Means a noun tells the names of a person, animal, place, or things. Students, now look at the board. We have started the chapter with a noun. The topic of this chapter number 5 is common noun and proper noun. But we have started the chapter with noun. So what is noun? A noun is a naming word. A noun is a naming word, or a noun is a word. A noun is a word which tells us the name of a person, animal, place, or thing. Okay, and we have done several examples. So we have gone through the examples also. We have seen the examples: Ram, Sita, Radha, Krishna. All these are the examples of what noun of persons. Now look here, animal. Name of animal, you can say cow, buffalo, ant, cat, ox, example, etc. Now place, name of a place: Delhi, Mumbai, Kolkata, Australia, America, England, Europe. All these are name of a place or a country. Now let us see things. What is things? Like pen, pencil, marker, shirt, shoe, pant, glass. All these were the examples. ये हमने सारा कल किया था कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम बताता है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. एंड we have done the examples. Now we have now come back to the topic that how many types of nouns are there. Nouns are of how many types? Nouns are of 5 types. Nouns are of 5 types. They are: number 1, proper noun. They are proper noun. Yeah, they are proper noun. Number 2, they are common noun. Common noun. Yes. Number 3, it's what? Collective noun. Number 3, it is collective noun. Okay, students. And this side I'm writing number 4, that is material noun. It's material noun. And the number 5, it is abstract noun. Abstract noun. Students, I have mentioned you yesterday that this material noun and abstract noun, we are not going to study about these two. इन दोनों के बारे में हम क्लास 3rd में चर्चा नहीं करेंगे. हम इस क्लास 3rd में we are going to discuss 1, 2, 3 types of nouns. Proper noun and common noun in chapter number 5, and collective noun we will discuss in chapter number 6. So I hope it is clear. आपको ये clear हो गया होगा कि what is common noun and what is proper noun. Okay, now let us begin with the chapter common noun and proper noun. Now what is proper noun? Okay, now let's move back to our class. बच्चों, ये सारी चीजें हमने कल की थी. जस्ट इट वाज अ रिकैप. ये हमने बस रिकैप किया था कि व्हाट वी हैव लर्न यस्टरडे, व्हाट वी हैव डन यस्टरडे. नाउ let us come back to our topic, that is number E. What is proper noun? What is proper noun? We have already discussed about this, that a proper noun is the name. A proper noun is the name of a particular. Yes, particular means specific, definite. Particular, look here, particular person, animal, place, or thing. Now, yes, look here. This is the definition. ये answer है. What is proper noun? The answer is a proper noun is the name. A proper noun is the name of a particular person, animal, place, or thing. Students, now look here. Now, what is particular का मतलब क्या होता है? Specific, which is only one in this whole world. जो दुनिया में केवल एक हो. दुनिया में एक हो. If I say राजेश, मैं अपना नाम कह रहा हूं, then I am alone. Yes,
इन दिस होल वर्ल्ड आई एम अलोन, मैं अकेला हूं ना, मेरे जैसा और कोई भी होगा, मेरे नाम के होंगे बट मेरे जैसे नहीं होंगे। यस, राइट। नाम बहुत सारे राजेश होंगे बट मेरे जैसे नहीं होंगे, या उनके फादर्स के नेम अलग होंगे, मदर्स के नेम अलग होंगे। तो दुनिया में जो केवल अकेला इकलौता होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लाइक यस्टरडे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल दैट द ताज महल, द ताज महल, the Taj Mahal is in Agra. Agra. Now look here example. What here? Look at this example. पहले तो उसमें noun पता करते हैं. What now? What is noun? Noun is the name of a place. ये जगह का नाम है, building का नाम है. Things. Taj Mahal. It's a noun. Now look here. Agra. It is the name of a place. ये जगह का नाम है Agra. Where is Agra? Agra is in Delhi. Agra is in Delhi. Yes. Clear? समझ में आ रहा है? Yes. Now these are noun. ये दोनों noun है. Now which nouns are they? ये कौन से noun है? So now let us discuss. It's a proper noun. It's a proper noun. Students look here. ये proper noun है and this is also proper noun. This is also proper noun. Now look at the example, students. Like the Taj Mahal is in Agra. Means specific name, particular किसी का, व्यक्तिगत किसी का नाम हो तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा. द वेरी इजीएस्ट वे टू लर्न समथिंग ऑनलाइन इज टू रिपीट आफ्टर द टीचर. आप मेरे साथ साथ अगर रिपीट करते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, देन इट यू गेट यू अंडरस्टैंड बेटर, इजीली, जल्दी सीखते हैं. ओके, नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम डेफिनेट भी बोल सकते हैं इसको. इट्स अ डेफिनेट, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर किसी का नाम हो, व्यक्तिगत किसी का नाम हो. अगर मैंने मार्कर कहा तो कौन सा मार्कर, विच मार्कर, यहाँ पे कोई नाम नहीं है. इफ आई से पेंसिल, कौन सा पेंसिल, इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन. स्टूडेंट्स, बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा पेंसिल, क्या कहा मैंने? व्हाट आई हैव सेड? पेंसिल. विच पेंसिल, कौन सी पेंसिल, देन दैट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन. यस, अगर मैं कहूं नटराज पेंसिल, देन इट्स अ प्रॉपर नाउन. Apsara pencil, then it's a proper noun. Clear? Clear what is proper noun? Students, show me your thumb if it is clear. Proper noun clear हो गया? Everyone? Okay, fine. Thank you. Now let us move on to common noun. Let us see common noun. One more thing, students, listen. Notes. Look at the notes here. What I am giving here. Look at the notes, students. ध्यान दीजिएगा, लिख के आ रहा हूँ. What I am writing. Notes. A proper noun. A proper noun always begins with a capital letter. A proper noun always begins with a capital letter. यानी कि proper noun अगर sentence के बीच में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, here अगर proper noun है यहाँ पे, this is one sentence here, from here to here, ये one, अगर एक one sentence है, this is one sentence, and if we are using, अगर हम यहाँ पे proper noun use कर रहे हैं तो उसको हम capital letter से start करेंगे. Proper noun always begins with a capital letter. Clear? Clear students? समझ में आ गया? That capital letter always begins with a, sorry, a proper noun always begins with a capital letter. Remember, look carefully. Now look here, now look here. Look at one example, one more example here. Look at one example here, that she lives in London. Is this a right sentence? क्या ये right है? Is this sentence a correct sentence? Yes or no? She lives in London. Wrong. Very good. Yes, Adamya. Very good, beta. Yes, this is wrong. Why? Because this is a proper noun. ये proper noun है. It's a proper noun, and it should start with a capital letter. Now look here. She lives in London. Now, which one is the right? First
and second. Now, which one is the right one? The second one is the right one. Yes, this is wrong. The first one and this is the right one. Now, look here. I have used your capital L. मैंने यहाँ capital L use किया है. Means what is this? It's a proper noun. It's a proper noun. Fine. Okay, it's a proper noun. Very good. Yes. बहुत अच्छे. उम्मीद करता हूँ. Yes, I hope everyone is understanding what is proper noun. Proper noun होता क्या है? Proper noun always starts with a capital letter. Yes. A proper noun always starts with a capital letter. Fine. Thank you very much, students. Now, I hope it is clear. ये clear हो गया होगा. What is proper noun? A proper noun is the name of a particular person, animal, place, or thing. This is the definition. Or example, you can write so many examples. So many examples you can write. बहुत सारे examples है. अगर आप लिखना चाहो तो ये board sufficient नहीं है. Look here. Examples. Look here. Example, Delhi, D capital. Yes, you can say Balia, B capital. Okay, you can say Ram, R capital. You can say Rajesh, R capital. Yes, do you understand? All these are examples of proper noun. Yes, one question. Yes, ask your question. Ask your question. Ask your question. Hurry up. You have a doubt? Do you have a doubt? Yes. सर हम लोग प्रोनाउन को स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते. Pronoun नहीं, proper noun. It's Yes, not sir. pronoun, it's proper noun. क्या है ये? Proper noun. बोलो. Pronounce proper noun. Read proper noun. Proper noun small letter में नहीं लिख सकते हैं. Okay? Fine. Thank you. Now let us move on. Let us move on to next. This is clear. Everybody show me your thumb. It is clear. बहुत आसानी से हम एक वाक्य अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर नाउन है. अगर वो प्रॉपर नाउन है तो डेफिनेटली कैपिटल लेटर से लिखा होगा. ओके, बट ये याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर स्टार्टिंग में हमने द लिख दिया, दैट द नेम of my school is D capital. Look here, Devasthali Vidyapit, or I can say the name of my school is Devasthali. तो अब इसको proper noun मत बोल देना. This is not noun. ये noun नहीं है. ये starting सर आपने कहा था capital letter से start होगा तो proper noun है, but no, this is not noun. ये noun नहीं है. Okay, this is not noun. Now look here. What is noun here? School. School is noun here. Devasthali is noun here. So school क्या है? Common noun. And what is Devasthali? Devasthali is a proper noun. Devasthali is a proper noun. See the difference. अब दोनों में difference देखिए. ये भी noun है, ये भी noun है. This is also noun and this is also noun. But here, if I have written in small letter, यहाँ पे small letter से लिखा है, so this is not a proper noun. But here in Devasthali, I have used D capital use किया है मैंने. So D here Devasthali, it's a proper noun. Clear? Students, clear? Show me your summary app. Yes, thank you very much. Fine. Now let us move on to common noun. Let us move on to common noun. Students, now look here. Number B, it's common noun. A common noun is the name given in common to every person, common to every person, animal, place, or things of same class or kind.
स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा। और यू कैन से कॉमन नेम्स ऑफ, वन मोर डेफिनेशन, ये भी आंसर सही है, दिस इज द राइट आंसर विच यू हैव टू लर्न, ये आपको लर्न करना है। बट टू अंडरस्टैंड वन मोर डेफिनेशन यू कैन राइट, एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दैट कॉमन नेम्स, common names, common names of person, animal, place or thing is called, what? Common, common noun. This one just to understand, ये सिर्फ समझने के लिए, only to understand, I have written here that common names of person, animal, place or thing is called common noun. Common name of persons. Now we will see the example. Now we will look at the example. First look at the definition. सबसे पहले तो definition पे ध्यान दीजिए। अभी हम we will see proper noun, common noun, proper noun, common noun. Two column I am going to write. दो column मैं यहाँ पे बनाऊंगा और ध्यान से देखिएगा what is the difference between common noun and proper noun. Okay, first now look at this definition. What is common noun? A common noun is the name given in common to every person, animal, place or thing of same class or same kind. एक ही तरह के लोगों को, इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा। मेरे साथ बोलिए, try to speak. No one is speaking. You are simply sitting and looking at me. इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक जात के लोगों को एक साथ रखकर अगर हम एक नाम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। once again look here, a common noun is the name given in common to every person, animal, place or thing of same class or kind, or you can just simply understand, simply साधारण simple language में आप ये बोल सकते हैं, common names of person, animal, place or thing is called common noun. Now let us see the examples. Okay, look here. Now let us see the examples, students. Students, please look at the board carefully. Now students, I am writing here two columns, one this side, one this side. This column here, it is proper noun. आपको ये समझ में आ गया है कि what is proper noun. Now look at the examples. The examples of proper noun, this side and this side, it will be common noun. Proper noun, common noun. Now look here, students, I am writing here. Number one, it is what? Sohan. I am writing here. Sohan, Mohan, Ram, Shyam. These are proper noun. All these are what? These are proper noun. ये सारे क्या है बेटा? ये proper noun है. Now this column I am going to write proper noun. इस column में मैं proper noun लिखूंगा. Look carefully. Now look at second one. It is Radha, Meera, Sita and Geeta. Okay. Now third one, look at the third one. I am writing here. It is Tom, Moti, Tommy. Okay. Now number fourth one, I am writing here. Pussy, Lucy. Okay. Number five, look here. Gaya, Ranchi, Balia. Okay, now I hope. Okay, one more. Number 6 पे आप चेक कर सकते हैं. Rampur, Salempur. Okay, one more. Number 6, number 7. Can I write here? Okay, let me write here. Now look here. India, Nepal, America. Okay, students. Now look at the example. All these are proper noun. मतलब ये एक जात, अब ये मोहन भी लड़का है, सोहन भी लड़का है, राम भी लड़का है, श्याम भी लड़का है.
तो इन सबको, एक जाति के लोगों को अगर एक साथ रखकर अगर हम एक नाम देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन. नाउ लुक केयरफुली. सोहन, मोहन, राम, श्याम, ऑल दीज आर बॉयज. देन बॉयज, बॉयज क्या है आपका? कॉमन नाउन. क्लियर स्टूडेंट्स? शो मी योर थंब. समझ में आ रहा होगा? यस. नाउ लुक हियर. राधा, मीरा, सीता, गीता, व्हाट आर दे? दे आर गर्ल्स. यस, लड़कियां. दिस इज कॉमन नाउन. लड़कियां इधर आओ. मैंने किस लड़की को बुलाया? देयर इज नो डेफिनेट गर्ल्स. नो डेफिनेट. आई एम नॉट कॉलिंग टू एनी डेफिनेट गर्ल्स. यस, मैंने किसी भी व्यक्तिगत किसी लड़की को नहीं बुलाया मैंने यहाँ पे. अगर मुझे व्यक्तिगत किसी को बुलाना होगा, इफ आई वांट टू कॉल अ डेफिनेट गर्ल, आई विल कॉल विथ हर नेम. राधा कम हियर, यानी राधा केवल आएगी. मैंने कहा लड़कियां इधर आओ, मींस ऑल द गर्ल्स विल कम. मींस गर्ल्स हियर, इट इज अ कॉमन नाउन. राइट ना? यस. नाउ लुक हियर. टॉम, मोटी, टॉमी. नाम से लगता है इट इज द नेम ऑफ अ डॉग. So what is dog? Dog is a common noun. Dog is a common noun. Yes. Now look here. Pussy, Lucy. Pussy, Lucy, cat. Pussy cat, pussy cat. Where have you been? You have been to London to see at the Queen. एक राइम से नर्सरी में आपने पढ़ा होगा. Pussy cat, where have you been? I have been to London to see at the Queen. Fine. Look here. Look, Pussy and Lucy. What is this? It's a name of a cat. यहाँ पे एस का प्लूरल मत करो, बस बॉय, गर्ल, डॉग, कैट. नाउ गया, रांची, बलिया. गया बिहार में है, इट इज इन बिहार. रांची, इट इज ऑल्सो इन बिहार. एंड व्हाट इज बलिया? बलिया इज इन यूपी. सो इट्स अ टाउन. क्या ये? टाउन, शहर, टाउन. सो टाउन इज अ कॉमन नाउन. सो टाउन इज अ कॉमन नाउन. नाउ लुक हियर. रामपुर, सलेमपुर, गांव का नाम लग रहा है. यस. विलेज. ओके, विलेज. वेरी गुड. यस, विलेज. तो ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन. समझ में आ रहा होगा? आई होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स. यस. नाउ लुक हियर. इंडिया, नेपाल, अमेरिका. व्हाट इज दिस? हु विल टेल? हु विल टेल? श्रेया सिंह. नाउ यू टेल मी. यस, वेरी गुड. नाउ टेल इसका कॉमन नाउन क्या होगा? इंडिया, नेपाल, अमेरिका. Yes, country. Country. Very good. Then yes, country. Then what is country? Country is a common noun. Country क्या हो गया आपका? Common noun. Very good. Now let me write. Yes, let me write some more question. I'm going to ask you. Now I'm not going to answer. मैं answer नहीं बताऊंगा. I'm not going to tell the answer now. Now I'm going to ask to the students. Okay. So आप मुझे answer देंगे. You have to answer me. Okay. Now look at the board carefully. Okay, now let's see some more. It was country, India. Okay, fine. Now look here. Bihar, Bihar, UP, Delhi. What is this? आपको बताना है. You have to tell me. Now again. Patna, Delhi, Chennai, Ganga, Yamuna, Kaveri. Next, Sunday, Monday. Next, January, February. Okay, now you have to answer me. आप मुझे बताएंगे. Now who will tell me the first one? Okay, fine, very good. Yes, you tell me. Bihar, UP, Delhi. Come on, hurry up. Yes, sir. Bihar. हाँ, yes. ये क्या है? इसका कॉमन नाउन क्या होगा? Sir, country. हाँ? Country? No, wrong. No, it's not country. No. It's anyone? No, it's not country. Sorry, country. ये country के नाम नहीं है, देश के नाम नहीं है. Now who will tell? Yes, Jia. You tell me, Jia.
Common noun of Bihar, UP and Delhi. City. Yes. City. No, it's not a city. Wrong. ये city नहीं है. No, wrong answer. Wrong. Now who will tell? Who is this? Avani Yadav. Okay, Avani, you tell me. Yes, tell me. Avani, Bihar, UP and Delhi. Avani, unmute it. Come on, hurry up. Yes. State. हाँ. Sir, State. Very good. Rajya. State. Yes. Sir, और State. नीचे State. सर नीचे एक मिनट आई एम नॉट आस्किंग. आपको नहीं बताना है वो नीचे क्या है. यू डोंट हैव टू टेल. आपसे जितना पूछा मैंने आप उतना बताइए. द रेस्ट आई एम गोइंग टू आस्क टू समवन एल्स. किसी और से पूछूंगा. नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. बिहार, यूपी एंड दिल्ली, ऑल आई हैव रिटन इन कैपिटल लेटर. ये कैपिटल लेटर यूज किया है मैंने यहाँ पे. आई हैव यूज कैपिटल लेटर. So it's a proper noun. It's a proper noun. But here look here. State. यहाँ पे ये state capital से start नहीं होगा. यहाँ as होगा state. State यानी राज्य. So it's a common noun. किस राज्य से belong करते हो? तो आपने कहा राज्य. तो राज्य का मतलब कौन सा राज्य? There are many states. There are 29 states in India, right ना? तो कौन से? तो ये common noun है. यानी कि ये जातिवाचक, एक जात के लोगों को एक साथ रखना या एक जाति के वस्तुओं को एक साथ रख करके अगर हम एक नाम देते हैं तो वो कॉमन नाम कहलाता है. नाउ लुक हियर. बिहार, यूपी, दिल्ली, ऑल दिस आर, ये सारे क्या है? स्टेट है. नाउ हु विल टेल द नेक्स्ट वन? पटना, दिल्ली एंड चेन्नई. पटना, दिल्ली एंड चेन्नई. हु इज गोइंग टू आंसर मी? कम ऑन, लेट मी सी. हु विल टेल मी द आंसर? नो वन. नो वन इज रेजिंग योर हैंड. कोई अपना हाथ ऊपर नहीं उठा रहा है. अनन्या तिवारी. वेरी गुड. यस अनन्या. या यू टेल मी. पटना, दिल्ली एंड चेन्नई. यस. कॉमन नाउन. इसके लिए कॉमन नाउन बताइए. कम ऑन. सर सिटी. सर सिटी. नो, रॉन्ग. इट्स नॉट. नो सिटी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे इसको. शौर्य पांडे. यस शौर्य पांडे. कम ऑन. शौर्य पांडे. यस. कंट्री. नो, इट्स नॉट अ कंट्री. रॉन्ग. So raise your hand. Raise your hand. Who is going to answer me? Yes. Who will answer me? No one. Avanish. Yes. Okay, Avanish, you answer me. Patna, Delhi, Chennai. Patna. सर कैपिटल. Very good. Sir, Capital of Bihar is Patna. Capital of India is Delhi, and capital of Bangalore is Chennai. Right now? Yes. So ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे? Capital. Very good. Very good. So what is this? These are common nouns. Okay. Yes, Avnish, now mute it. Yes, sir. Ganga, Yamuna and Kaveri. Give one name, one common name to in सब को मिला करके एक common name देना है. Come on. The river. Yes, we have studied in water or water. SST in EVS we have learned in water or water. We have learned the name of rivers. नदियों के नाम हमने पढ़े थे. तो ये क्या है बेटा? नदियां हैं. It's a river. Yes. Okay, fine. Now, yes. Now, who is going to answer the next one? Next, who is going to answer? Who is this? Varun. Yes, Varun. Good. Varun, come on, unmute. Sunday, Monday. Sir, Days. Very good. ये days हैं. So, what is day? Day means they are what? Common noun. बेटा clear हो रहा है? What is common noun and what is proper noun? Yes. Yes, sir. Now who will tell me the next one? The next question, who is going? Shivansh Tiwari. No, who is this? Write your full name. Who is Anvi? What is this? Box. Anvi. Write your full name. His Rajnish Yadav. Okay, Rajnish, come on. Now tell me. January, February. Sir, Month. Very good. Yes, very good. So students, I hope it is clear. आपको clear हो गया what is noun, what is common noun and what is proper noun. Means capital letter से अगर start होता है then that is a what?
या कॉमन, नो दैट्स अ प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन होगा। जो और एक ही जाति को लोगों को कॉमनली, एंड कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। सब किसी प्लेस, ढेर सारे लोगों को मिलाकर का अगर हम एक नाम देते हैं, सेम क्लास के होने चाहिए। यस yes, okay, fine, I hope it is clear everyone. Now it's your turn. If you want to ask a question, you can